let's start with 2025. इसमें front of queue pointer है. The most crucial data in these questions would be जहाँ उसने आपको बताया वो कि point कहाँ कर रहा है. So the front of the queue points to the next data item to be removed. Okay. And then end of queue points to the last data item that was added. So जो भी आपका वैल्यू आपने ऐड की है वो उस पर पॉइंट कर रहा है और जो वैल्यू आपने अब रिमूव करनी है हेड उस पर पॉइंट कर रहा है. The queue is implemented using 3 variables and a 1D array of 8 elements. The variable number of items stores the number of items in the queue. Okay. Then we have the pointer variable stores indices of the array. Okay. Complete the diagram to represent the state of the queue as shown above. Yes. So they're saying कि आपके पास इस तरह से queue की जो formation है उसको करने के लिए what would you need to do? Complete the diagram to represent the state of the queue as shown above. ठीक है, ये आपके पास एक random queue दी हुई है. अब आपने इसको बताना है कि कैसे होगी. So देखो इसके number of items already filled in that are 5 because we have 1, 2, 3, 4, 5 items. How do we do this? ये आपके पास एक queue ही given है और ये उन्होंने array की form में दी हुई है but the array is not labeled. So they're saying कि अब आपने इस array को label करना है. So basically देखो अभी आपका जो front of queue है that is pointing to D3 और you can clearly see this is at the second index. So आपने second index पे जाके आपने you will place D3, then we have D4, then you have D1, then you have D2, then you have D5. This is an interesting question. This is November 23 paper 2-2. So what is going on in this question? Basically the question says कि आपके पास एक pointer 1 है that is the starting pointer, then you have the ending point and then we have the free list pointer. ठीक है, you have some labels and then F1, F2, F3, F4 represent the data items in the free list. ठीक है, ये आपने free list अलग की हुई है. So यहाँ से basically आप node को you can just point it towards the PTR the actual list. So यहाँ पे सब free nodes है और नीचे जो है ऊपर जो है वो आपकी actual value है. Okay, so the linked list is implemented using 2 variables and 2 1D arrays as shown. आपका स्टार्ट पॉइंटर जो है वो सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने फिल करना है और ये आपकी डेटा एरे है और ये आपकी पॉइंटर एरे है. ओके, सो D40 से जो है आपकी लिंक लिस्ट यू कैन क्लियरली सी यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सो अब आप D40 देखो कहाँ पड़ा हुआ है. वेयर इज D40 स्टोर्ड? इट्स स्टोर्ड एट इंडेक्स 4. सो योर स्टार्ट पॉइंटर सिंपली बिकम्स इंडेक्स 4. ओके, देन लेट्स स्टार्ट गोइंग इन दिस डायरेक्शन. D40 से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, और D40 के नेक्स्ट पे आपके पास कौन सी वैल्यू? सो आई एम जूमिंग आउट अ बिट. D40 के नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है D32 and you can clearly see that D32 is stored at index 1. So D40 के नेक्स्ट पॉइंटर में आपने 1 स्टोर कर देना है. ठीक है, so we are done with D40. From D40 we are going to D32. Then D32 के आगे D11 है. Okay, अब हमें D11 का we have no idea where it's stored. So what do we do? So D32 का जो नेक्स्ट है वो आपका 2 है. ठीक है, so next इसका इंडेक्स 2 पे आपने पॉइंट किया. So इंडेक्स 2 पे that means D32 is pointing to D2, which means कि आपके second index पे D11 store हो जाएगा. So यहाँ पे D11 आ जाएगा, index 1 पे D32 आ जाएगा और D40 आपका था index 4 पे. Okay, then D11 is now pointing to D100. So D11 का next है 3 पे. You go to index 3 and here you have to save D100 और इसका जो next है वो null value पे point कर रहा है. This is how it's supposed to be. Okay, so if you guys understand till this point, उसके बाद तो बिल्कुल simple है. So now you just have to save these free nodes in the list. So F2 उन्होंने आपको already बताया है. F2 is इसका जो next है वो 7 पे है, ठीक है. So अब आपको नजर आ रहा है clearly कि F2 का next है F3. So यहाँ पे F3 आ जाएगा, F3 के next पे F4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 7. सो यहाँ पे 7 था, 7 पे F3 आ गया. 7 के नेक्स्ट पे आपके पास 8 पड़ा हुआ है. सो यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड 8 इज द एंड ऑफ लिंक लिस्ट. सो यहाँ पे ये आ जाएगा. अब सिर्फ F1 रह गया एंड देयर इज ओनली वन स्लॉट हियर. सो यू कैन जस्ट लिटरली गो एंड पुट F1 देयर और F1 इज पॉइंटिंग टू F2 हियर, राइट. F1 इज पॉइंटिंग टू F2. F1 का जो नेक्स्ट है वो आपका 6 पे पॉइंट करेगा फॉर इट टू पॉइंट टू F2. दिस इज इट. सो आई विल ओपन द मार्किंग स्कीम फॉर दिस एज वेल. अगर आप इसके मार्किंग स्कीम देखो तो इन्होंने कहा है फॉर नल पॉइंटर एक्सेप्ट 0 और 5 और एन आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन 8. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके 5 ही बनाना होता है हमेशा. यू कैन इवन ड्रॉ माइनस, राइट, -1 और 0 जो भी अप्रोप्रिएट है.
And then this is the last part for today. That is, the original linked list is to be modified. A new node D6 is inserted between nodes D32 and D11. तो D32 और D11 के दरमियान आपने एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, which is going to be node D6. Okay. Complete the steps. Okay. अभी देखो ये आपके पास में ये फ्री लिस्ट है, ठीक है. So पहले आपने फ्री लिस्ट में आपने अपनी वैल्यू को असाइन करना है D6 let's say, जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू, एंड देन इस नोड के फिर आपने नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करके आपने इसको आगे मूव करना है हियर एंड देयर. ओके, सो आप लोग जल्दी से मुझे बता सकते हैं प्लीज व्हाट डू वी डू हियर. सो फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दी, यू विल असाइन D6 टू F1 बिकॉज F1 इज द फ्री लिस्ट ऑफ फ्री नोड्स राइट नाउ. यस, नेक्स्ट. अब F1 सो D6 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किस पे पॉइंट करना चाहिए. वी हैव टू इंसर्ट द वैल्यू बिटवीन D32 एंड D11. सो व्हाट डू वी डू, it should point to D11 now. So you will say set the next pointer of this node to D11. ठीक है, then set pointer to point 2. Okay, pointer 2 क्या है? Pointer 2 is the free list pointer. So D6 F2 पे आ जाएगा because F1 is gone now. And set of pointer of blank to blank. So अब D32 का जो next है वो भी D11 में point करेगा. So इसको हमने क्या करना है? To D6. And that is the answer. So D6 to F1, set the pointer of this node to D11, set pointer 2 to F2, and then D32 to D6. I think मैंने यहाँ next लिख दिया. यहाँ पे हाँ the pointer. So next is also fine, or you can just write next pointer. That will be better. Okay, so that's it.